नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाउ यू ऑल? रामचरितमानस की बड़ी फेमस एक 2 पंक्तियाँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसी पे बेस्ड है हमारा आगे का जो बात होगी। वो कहती हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मतलब कहने का कि जैसी आपकी भावनाएँ हैं और जैसी भी किसी व्यक्ति की भावनाएँ हैं, उसको हरि की मूर्ति वैसी ही दिखेगी। मतलब आप अगर आपकी भावनाओं में आस्था है, अगर आपकी भावनाओं में विश्वास है, अगर आपकी भावनाओं में अ, एक बिलीफ सिस्टम है जो कहता है कि यस देयर इज गॉड, देन यू विल सी गॉड। सो इट्स नॉट दैट इट विल बी फ्रॉम दैट साइड, इट विल बी फ्रॉम योर साइड कि व्हाट इज योर इमोशन एंड थॉट। इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये बात सततः मतलब टीएटी पे एप्लीकेबल है कि जाकी रही भावना जैसी, जैसी आपकी भावनाएं हैं वो पिक्चर आपको वैसी ही दिखेगी। दैट इज व्हाई इट इज सेड नो कि इट इज टेस्ट ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स। व्हाट डू यू सी? What emotions come to your mind when you see to that picture? Are you able to relate to that picture, or you're not able to relate to that picture? What ideas, what thought process goes in your mind, or as we say, a perception? So basically, how does this new idea amalgamates with your existing thought process? So the major factor is ki what is your existing thought process. Suppose in your existing thought process you have a weak belief system. You don't trust, or your trust factor is shaken for some reasons. You don't believe. So that sense of suspicion is there in you. It can be because of various reasons. It may be somebody has dissed you, somebody has misbehaved with you, or somebody has disowned you, or something has happened. Variably, anything, whatever might have happened, how it has affected you is your definition. How do you respond to that? So, whatever is your thought process, that is being reflected. There is no art of writing a good story. It's not about that. It is said by the psychologist in his briefing that it is not the test of your English language. No. Your English language and grammar is not being tested primarily here. Yeah, communication and the medium of expression will be English only. So there is no other language which is applicable pan India. So thoughts. अब आप खुद सोचिए कि what kind of thoughts come to your mind when you look at a particular situation. Do you look at it? Suppose there is a challenge. So do you look at it with the intent of finding a solution? Or do you look at it as a setback? If you look at it with the intent of finding a solution, then you will find the solution. Then your efforts will be towards the solution. But if you look at it as a problem, then your efforts will be primarily centric towards the problem. जाकी रही भावना जैसी। अगर आपको अच्छी स्टोरी लिखनी है, आपको अपनी भावनाओं पे काम करना है। यानी कि हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड, हाउ यू टेक ऑन challenges, right? It can be very simple picture, very simple picture. Somebody is roaming around in a forest. Somebody is crossing a bridge. What thoughts come to you? Maybe he has gone for some exploration, decided to walk on the bridge and feel. Only shows your extroversion. So what does he do when he goes there? Maybe he takes photographs, he collects data, he meets people out there, he creates an article on that, publishes it, creates a vlog on that.
makes people aware about this place. And another is that you see fear there, since it was a dense jungle. So you encountered a lot of species which you had not seen and you got scared, or you heard some voices. There are possibilities. Whatever is there in your thought process, that is what will come out. And eventually it will. Saying that no, no, I will not, I will override my thought process and write something which I want to write, then it is not possible, you know. Why? Because there is a series of pictures, not only one picture. You can't stay in your conscious mind and then dictate. ऐसा होगा नहीं. बहुत सारे factors हैं उसके लिए भी. You are under tremendous pressure to get recommended, for example. Pressure में है आप, time कम है. So your ideas and emotions will be captured by that. So if you really want to work, if you really want to, अब 10 तरह की 10 बातें लोग करते हैं. मैं भी डिटेल में जब जाऊँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस भी बताऊँगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. बट जनरली अगर हम बात करें कि इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव ऑन योर stories, if you really want to write good stories, what you really need to do is work on your thought process. Make it a free thought process, non judgmental, non critical, not self absorbed, not the kind of thought process which questions the authenticity, the plurality, or any kind of judgmental thing which might come to your mind. So उनसे आप अगर अपने आप को फ्री कर लेंगे तो पहला काम यहीं पे होगा. उसके लिए बेस्ट थिंग इज टू रीड and read in an analytical fashion. That comes from belief system. You see, if you really read and you come across, such stories which inspire. For example, today only I was seeing the girl who topped NDA. Very mediocre PM families and people are doing so many good things. Few days back, I read about the story of a lady whose two sons became army officers. Father had left a long time ago, very poor family. Cricketers, for example, you all are interested in cricket. Rinku Singh's story and uh, Tejasvi, forgetting his name, Bombay. तो ये सारी स्टोरीज आपको इंस्पायर नहीं कर रही हैं हाँ कैसे odds मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एंड फाइटिंग स्पिरिट पीपल आर फाइंडिंग वे. पर अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है कोई शॉर्टकट ले लें, कोई सिफारिश मिल जाए, चाहे आप सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं चूंकि आप पर्टिकुलर इससे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, सिस्टम इज बाइज्ड अगेंस्ट यू, तो आपका वैसा ही थॉट प्रोसेस. बट इसी थॉट प्रोसेस में आप देखेंगे लोग रास्ता निकाल रहे हैं. आपके पास लाइव एग्जांपल्स एंड एक या दो नहीं, इनॉर्मस लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि लोगों ने रास्ता निकाला है primarily on their sheer belief system, that spirit to fight, that spirit to continue the journey which they have taken. That is what is important. Your thought process will be strengthened by this belief system of fighting back, and also that yes, the perseverance pays, the hard work pays. बट इफ इन्फ्लुएंस विद द पीपल अराउंड हु से कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, कोई ये नहीं, अगर आप इस तरह के इंसान हैं या इस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, अनफॉर्चुनेटली इट विल बैकफायर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इफ सो डू लेट मी नो. और थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए. मैं बता रहा हूँ पूरी एसएसबी रामायण में छुपी हुई है और महाभारत में, अगर आप कहेंगे तो. मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा, कई एग्जांपल्स से थ्रू आपको बताऊंगा कि हाउ इट इज पॉसिबल टू सो इजीली रिलेट टू लाइफ विद ऑल दिस. कोशिश जारी रहे एंड प्रयास जारी रहे, मंजिल में मिलेगी. कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर. सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.